ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, बट सिमिलर क्वेश्चंस हैव कम. मान लो यू गेट अ क्वेश्चन टू दिस ट्यून, हाउ कैन वी डबल फार्मर्स इनकम. फार्मर इनकम को डबल कैसे किया जा सकता है? देयर वाज ऑब्वियसली अशोक दलवाई कमिटी made in 2016 for this exact purpose. And but let's say you get a question to this accord, how can we double farmers income? You have 3 minutes, try and brainstorm कि इस क्वेश्चन में आप क्या क्या लिख सकते थे. I'm assuming that if you get a question like this now, you should easily be able to write 15 to 20 points. And I'm able to see that in your chat also. अगर आपने सप्लाई चेन को पूरी तरह ढंग से समझा है, so you'll be able to write a lot of points. तो अब इस आंसर को लिखने की ट्राई करते हैं. ठीक है, लेट्स गो वन बाय वन. ठीक है, नाउ सीड्स में मैं क्या बेटर कर सकता हूं? आई कैन हैव हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, आई कैन हैव जेनेटिक एनहेंसमेंट्स इन सीड्स, है ना. लैंड और वाटर में मैं क्या बेटर कर सकता हूं? लैंड में आई कैन डू बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ लैंड. फॉर एग्जाम्पल कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल the idea of having specific ideas for people who have fragmented land holdings or small or marginal land holdings. Okay, water also here I've already read previous year questions, so I can adopt micro irrigation. I can do better resource management here. In terms of fertilizers and pesticides, what can I do? One idea is that I can ensure organic fertilizers and pesticides. Second is I can rationalize the use of fertilizers. अभी क्या होता है? ओवर यूज होता है फर्टिलाइजर का. आपने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, है ना. ओके, देन मशीनरी कैन बी मेड बेटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स. देन लेबर तो चलो फार्मर खुद ही है, बट आई कैन रिप्लेस द लेबर इंटेंसिव प्रोसेसेस विद मैकेनाइजेशन. देन I can focus on agricultural extension services. I can provide better energy, climate smart energy solutions. I can also think about schemes like PM Kusum, where solar energy is being used on the farm itself, that generates energy for the farmer and also generates income for the farmer. Then in terms of capital, I can do better financing. I can have better agricultural credit. I can think about cooperatives. I can think about crop insurance in case अगर कोई crop loss हो जाता है तो insurance needs to be better. Then in terms of production, I can firstly focus on organic farming and zero budget natural farming. इससे क्या होगा? Our export potential will become better, better price realization will happen. Then I can think about, in terms of crops, I can think about more productive crops. And how will I have more productive crops? If I grow for crop diversification. So I can shift to crops that are more productive. Then I can focus on these allied sectors like fisheries, livestock, better livestock management. I can think about integrated farming system, जिस पे question भी आया था 2-3 बार. Then I can shift farmers towards horticulture because it will lead to better realization of agricultural income. I can improve agroforestry services. This will also lead to better income. आगे देखते हैं. पोस्ट प्रोडक्शन में मैं क्या करूं? I can have better transport and logistics. इस पे भी काफी बात हुई है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में. Then I can focus on storage. Storage में I can develop cold chain, warehousing, etc. Then I can enhance the food processing potential, the waste to wealth potential, and focus on value addition in agriculture, right? This will also double farmers' income. Then in terms of marketing, I can focus on reforms in APMCs in the domestic market, better public procurement and better rationalized MSP policy. In terms of exports, I can fight to remove the sanitary and phytosanitary impediments to my export to ensure that WTO does not create hindrances to the export that our farmers are doing. There is no limit to the amount of points I can write if I get a broad question on agriculture. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, for whatever we read from now on, have this in your mind. Okay? अब इनकम हमने देख लिया. सेम चीज ही अगर सब्सिडीज पे आती तो आई वुड हैव रिटन दैट आई नीड टू रैशनलाइज सब्सिडीज इन all my inputs and shift subsidies probably here or probably here,
राइट. सिमिलरली टेक को अगर मेरे पे क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स, इफ दिस ब्रॉड क्वेश्चन कम्स, और जैसे क्वेश्चन आया था हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स, तो बायोटेक्नोलॉजी में पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड टू दिस हाई यील्डिंग वैरायटी एंड जेनेटिक एनहेंसमेंट ऑफ सीड्स, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ना. अगर आपके पास ये सारी चीजें याद हैं तो योर पॉइंट्स एंड आंसर्स विल ऑटोमेटिकली बी मोर मल्टी डायमेंशनल. देन if I talk about agricultural policy, I can talk of all these issues. Similarly, if I have to speak of climate smart agriculture, I have to focus on all dimensions. Okay, so agriculture mein aaj ke baad, if there is any question that we are writing, we will focus on the entire value chain of agriculture, not just the idea of input or production or post production, but all three.